Hello all, good day. Another Q4 FI26 video series. Today we'll be covering GSM Foils, an SME company but also growing at a very fast pace. So that's why I thought of covering this today. तो the Q4 FI26 result season is out. दिन में 10-12 रिजल्ट आ रहे हैं अभी के लिए तो बिकॉज ओनली द लार्ज कैप्स एंड ओनली द एक्सट्रीम्स द लार्ज कैप्स एंड द वेरी स्मॉल कैप्स अभी रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे. मिड कैप्स जो भी है वो अपना टाइम लेंगे, लास्ट के एंड अप्रैल एंड में या मई के फर्स्ट वीक में रिजल्ट आने चालू होंगे. तो विल कीप आर सीरीज गोइंग. So yeah, we'll get into the PPT today. So we have a PPT today, upgradation from the only Excel format videos. तो what I did is I wrote whatever I wanted on Excel. उसको मैंने क्लाउड को दे दिया और बोल दिया कि भाई एक पीपीटी बना दे. हाँ, तो आई गॉट दिस अमेजिंग पीपीटी. आई हैव ऑल द पॉइंट्स विच आई नीड टू कवर. तो एक एक करके चलेंगे. ठीक है. तो बेसिकली जीएसएम फॉइल्स करता क्या है, फर्स्ट पॉइंट तो. सो जीएसएम फॉइल्स इज़ अ प्योर प्ले फार्मा सेक्टर प्लेयर बोल सकते हैं. सो दे केटर ऑलमोस्ट एंटायरली टू द फार्मा सेक्टर इटसेल्फ. तो ये लोग क्या बनाते हैं, तो दीज गाइज मेक द अलूमिनियम फॉइल्स विच आर रिक्वायर्ड टू पैक टैबलेट्स और कैप्सूल्स. सो जब भी हम टैबलेट्स या कैप्सूल्स लेते हैं वो किस में आते हैं, वो अलूमिनियम वाले पॉप टाइप अलूमिनियम फॉइल्स में आते हैं. सो दीज गाइज मेक दैट. Though it is an SME company, as per the Q3 FI26 con call, management बोल रहे हैं कि yeah, we will be looking into getting into the main board. I mean main board as in NSE main listing within a period of 1.5 years. तो उस फेज में जो ग्रोथ आ रहा है which is massive and it cannot be ignored, right? So ये sales is growing at a pace of around 70-80%. तो why ignore a good company? So I thought of covering it today. Okay, let's move on. कोर प्रोडक्ट. सो दे हैव, तो ये जो फॉइल्स आते हैं दे कम इन 4 टाइप्स. वन इज़ अ सिंपल, let's move on to the next slide. Yeah, so one is a simple coated foil, aluminum foil which is coated with a chemical, and this is very simple. इसमें कुछ specification नहीं है, इसमें कुछ value addition नहीं है as such. Then comes a polylaminated foil. Polylaminated में क्या होता है, the aluminium के साथ एक लेयर का प्लास्टिक ऐड हो जाता है टू मेक इट फर्म, टू मेक इट रिजिड. सो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन, यू आर एडिंग वैल्यू, राइट? सो यू आर एडिंग अ पीस ऑफ लेयर ऑफ प्लास्टिक टू मेक इट रिजिड. इसमें वैल्यू एडिशन हो रहा है, दैट्स व्हाई यू कैन चार्ज मच हियर. उसके बाद है द बेस्ट थिंग विच इज़ द ब्लिस्टर और द फॉइल ब्लिस्टर पैकेजिंग. ब्लिस्टर पैकेजिंग क्या होता है, यू कैन सी लेट्स से एग्जांपल स्ट्रेप्सिल्स क्या होता है, इट कम्स इन अ ब्लिस्टर पैकेजिंग. तो ये जो स्ट्रेप्सिल्स नहीं है, ओके लेट्स टेक अ नॉर्मल एग्जांपल. स्ट्रेप्सिल्स नहीं होता वेयर there is a bump on the aluminum foil, right? It's like a safety guard for the tablet. So this is made to protect the tablet or the capsule from moisture and reaction with the potential, अगर रिएक्ट होके वो कुछ भी बन जाएगा. So even regulatory authorities require that these tablets must be sold in blister packaging. Yeah, so इसमें बहुत specification है, as you can see. You have to make that bump, you have to make it approximate, it should have that much of length, it should have that much of width. ये सब specifications है. So due to this they can charge even higher margins here. And the last comes printed foil. Printed foil में ये बड़े बड़े फार्मा क्लाइंट्स के नाम और लेबल छपा के बेच देते हैं अलूमिनियम पे. Yeah, so these are the 4 product categories we can say. अभी आते हैं इनके कैपेसिटी क्या है. तो इनके 2 प्लांट्स है. वन इज़ द वसाई प्लांट इज़ इन मुंबई एंड द अहमदाबाद प्लांट विच इज़ इन गुजरात. वसाई प्लांट इज़ द ओल्डर प्लांट. अहमदाबाद प्लांट अभी रिसेंट में लगा हुआ है इन विच वॉज कमर्शलाइज्ड इन Q3 FI26 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yes. So Ahmedabad plant is 5,000 metric tons, has a annual capacity of 5,000 metric tons, and Gujarat plant has a capacity of 10,000 metric tons. So Ahmedabad plant current utilization is 85% as per as on Q3 FI26, and Ahmedabad plant being a new plant, management has guided for a 50 to 60% capacity utilization for FY26, that is year ended 31st March 26. तो इसके हिसाब से मोटा मोटी एंड ऑल्सो मैनेजमेंट हैज़ गाइडेड फॉर वसाई प्लांट बीइंग एट 100% यूटिलाइजेशन. तो इसके हिसाब से मोटा मोटी वी शुड बी द
I mean the total throughput should be around 10 to 11,000 metric tons per annum. Yes. Okay. So, हाँ, this is with considering 50% utilization at Ahmedabad plant and 100% utilization in Vasai plant. तो इसके हिसाब से the revenue target should be around 250 crores which they have achieved successfully. But रिजल्ट में सिर्फ रेवेन्यू का नंबर दिखा है, अभी तक इन्वेस्टर पीपीटी कॉन कॉल कुछ नहीं हुआ है. तो वी विल हैव टू चेक इफ देयर इज volume if the volume targets of 10 to 11,000 metric tons have also been met. Yes. And also there is plans for Vasai plant. So अभी तो इतना बड़ा कैपेक्स हो गया, आपने कैपेसिटी ऑलमोस्ट 100% से बढ़ा दिया, 100 नहीं 200% से बढ़ा दिया एक्चुअली. तो द एनालिस्ट ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन कि अभी आगे क्या है, अभी आगे का प्लान क्या है आपका कैपेक्स का. तो एज पर Q3 FY26 कॉन कॉल अगेन, तो उन लोगों ने बताया है कि द टॉक्स आर इन प्रोग्रेस फॉर वसाई प्लांट ब्राउनफील्ड एक्सपांशन. ब्राउनफील्ड एक्सपांशन मतलब क्या है, विद इन द सेम प्लांट दे माइट ऐड अनदर फ्लोर और दे माइट एक्वायर न्यू एरिया एंड रैम्प अप द कैपेसिटी. इसके बारे में कुछ ऑफिशियली डिस्क्लोज नहीं हुआ है. दे सेड दैट विल अपडेट यू गाइज इन द Q4 FY26 कॉन कॉल, जो अभी अप्रैल 22 में हो रहा है, अप्रैल 22 को हो रहा है. यस. मूविंग ऑन. तो अभी हम इसको क्या क्यों कवर कर रहे हैं एग्जैक्टली, जो मैंने पहले बताया था. द March 26 रिजल्ट केम आउट यस टुडे एक्चुअली, एंड द रेवेन्यूज आर अप 80% YOY, राइट, विच इज़ इनसेन नंबर्स. आप देख सकते हो कुछ केगर लगाएंगे तो एटलीस्ट 20% का केगर तो होगा यहाँ पे QOQ बेसिस पे, तो विच इज़ इनसेन अमाउंट ऑफ पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ, राइट. हाँ, एक चीज़ है. और इनका दूसरा जो बढ़िया चीज़ लगा, एबिडा मार्जिन 12% है, पैट मार्जिन 8% है. यहाँ पे आप ज़्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर रहे हो, इसलिए दिस मार्जिन और ऑन अ लोअर साइड. यहाँ पे आप 20-30% का मार्जिन ऑब्वियसली नहीं चार्ज कर सकते. या सो द मेन पर्पस ऑफ कवरिंग दिस वॉज 79% सेल्स ग्रोथ इज वर्दी टू बी लुक्ड इनटू. ओके, मूविंग ऑन. Q3 FY26 कॉन कॉल हाईलाइट्स. तो जो चीज़ें इन्होंने बताया विच इज़ इन द Q3 FY26 कॉन कॉल, तो इन सिंपल में द मैनेजमेंट सेड दैट हमारा बिजनेस इतना ही है भाई. हम जिंडाल से स्टील लेते हैं, जिंडाल स्टील से हम फॉयल लेते हैं, फॉयल को हम ब्लिस्टर्स में बनाते हैं, या तो हमको उसमें लेबल छापते हैं और उसको कस्टमर को बेच देते हैं. जिंडाल स्टील हमको 15 से 20 दिन का क्रेडिट देता है. दे ऑल्सो सेड दैट like 1 or 2 years back when the company was very small, the scales were very small, Jindal Steel also did not give them credit. उनको कैश एंड कैरी पे खेलना पड़ता था. पे कैश इन एडवांस, टेक स्टील एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट. अभी उनको 15 से 20 दिन का क्रेडिट साइकिल मिल रहा है. देन ऑब्वियसली अब अगर आप जिंदाल स्टील से खरीद रहे हो, आपके पास, आप इतने छोटे प्लेयर हो, 300 करोड़ का मार्केट कैप है, आपके पास इतना कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होगा. तो ऑब्वियसली द क्वेश्चन आस्क्ड in the con call was, how do you pass on the aluminum prices? Aluminum prices in the recent past had been rising. In context of Q3 मैं बता रहा हूँ, अभी का मुझे पता नहीं है. In context of Q3 it was rising and they were asked कि आप are you able to pass on the price increases to the customers? तो इन लोगों ने बताया कि what do they do is they maintain 35 to 45 days of inventory first of all. तो जो भी price ups हो रहे हैं, they are benefiting from that, point one. दूसरा point ये है कि they revise the monthly price, they revise prices on a monthly basis. तो अगर उनको मंथ के एंड में लास्ट वीक में कुछ ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो दे ट्राई टू पुश इट टू द फर्स्ट ऑफ द नेक्स्ट मंथ और द फर्स्ट वीक ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ताकि वो रिवाइज्ड प्राइसेस पे हो और उनको कुछ हिट लेना ना पड़े. या सो फॉर एग्जांपल अगर 15 मार्च को आपको पता चल रहा है कि प्राइसेस 20% बढ़ चुका है और आपके इन्वेंट्री में prices उतने your inventory prices are lower, why would you know and you also expect the prices to go up in the next 20 to 25 days, so you will obviously expect the you will ask the customer to कि भाई एक दो you will try to push the customer to book the order in the first of the next month where the prices are revised. हाँ, so this was the third highlight. Fourth highlight was obviously they are a small player, जैसे कि मैंने बताया, भी 300 करोड़ का मार्केट कैप है. हाँ, 300 करोड़ का मार्केट कैप है, उनके पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होगा. तो जो भी दिस बड़े बड़े फार्मा क्लाइंट्स है, जो है
जो कि let's like Lupin, Sun Pharma, all these big clients are not their customers, because these big clients have a credit period of 100 to 120 days, and these guys want a credit period between 30 to 60 days. उससे ज़्यादा इनसे नहीं होता obviously, right? अगर आप 15-20 दिन में सप्लायर को आपको पैसा देना पड़ेगा और कस्टमर बोल रहा है कि भाई मैं तो 100 दिन बाद दूंगा, ये तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल. Then comes the expansion in FY27. So they are targeting to enter into a new space, which is the laminate segment. This was just a like a teaser given by the CFO. This is might be like Q3 of or Q2 of FY27 में इसका कुछ inputs आएंगे. Okay, then yeah. तो अभी Q4 का कॉन कॉल हो रहा है अप्रैल 22 11 AM को. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू ज्वाइन इन. आपको लिंक उनके वेबसाइट में मिल जाएगा. Okay, so what should we be looking at in the Q4 con call and in the investor PPT? पहली बात तो न्यू केपेक्स प्लान्स क्या है. आपने बताया था कि 1-2 महीने के बाद आपको you guys will update us about the capex plans. So obviously they should ideally do it in the investor PPT itself, but if they don't, we'll have to ask them in the con call. Then Ahmedabad utilization for FY27, what is the target? आपने 50 to 60% capacity utilization बोला था 26 के लिए, which ideally should have been achieved looking at the revenue number. But what about the future capacity utilization guidance? ये हमको जानना पड़ेगा. Then the third thing was they told that Ahmedabad plant के बाद they will be able to play the volume game with the big players. We'll have to look into the progress on this too. Okay, one thing which I could not find it in the Q3 FY26 investor PPT was that they do not give a volume growth or a volume split or a revenue split between the segments. अगर आपकी blisters के margin बड़े हैं और and if you're growing volumes only in the foils category, I mean maybe the margins will start depleting. So maybe with the इसके बारे में भी we'll have to ask them. Then comes utilization guidance, which was a turn, and the last thing was which I looked into was because of all the Trump ka whatever the Strait of Hormuz situation, I looked into if they were into exports. तो जब मैंने देखा मुझे पता चला कि they are not into exports at all. They do very little with merchant exporters. ये क्या है ये तो बाद में देखेंगे. But yeah, so ideally with such a big market in US for Indian drugs, we will the export market can be huge. So we'll have to question them on the export markets too कि आपके thoughts क्या है इस पे, when are we trying to enter it. Yeah, so these are the things we'll have to track for Q4, and that's it. Hope you enjoyed the video. Thanks for watching.